Yes, statement. Okay, negative and 0. Okay, so p and j हमने name दे दिया suppose. Then class, फिर we have to check public as public static void main. Public static void main. Okay, public static void main. Public static void main. Here we give the name, that is string args. Okay, then after int variable int st equal to 0, then if st statement is equal to 0, then we have to print system dot out dot println system dot println given number is positive. Okay, positive. Then according to our syntax, if then close it if statement, then take it else if st, just let me type it first. ओके अभी हमने थर्ड सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे. ओके, वी विल राइट फॉर सेकंड. देन system dot out dot println. Okay, so here we have to write given number is negative. Given number is negative. Okay, then check if else if, then next is according to syntax else one, right? else part here, then go to the else part here. So given number is 0, system dot out system dot out just 1 minute. Okay, sorry. So system dot out dot println. Okay, so here we will write like given number is 0. Okay, is 0. So given number is 0. Okay, then close else, then close if else, and close if. Okay, so यहाँ पे हम लोगों को what the if the expression one for if is false, it check the expression if next else if block, and so on. If all expression are false, body of expression is executed. So this is, let's run this program. Okay, go to the, let's save it first. Okay, so dot java extension. Okay, then go to the directly, you can run here also java c, then file name. Okay, let's check it.
अगर एरर नहीं होगा तो कंपाइल होगा, एरर होगा तो कंपाइल मतलब एरर शो होगा अपन को। ओके, ये कंपाइल प्रोसेस है इसलिए इतना टाइम ले रहा है। ओके, अभी कंपाइल मतलब ये हमारा प्रोग्राम एरर फ्री, सो ये डायरेक्टली हम लोगों को ये पास शो हुआ, राइट। नाउ टेक द प्रोग्राम नेम, दैट इज you can say, okay, you can put the program name है java, the file name, okay. So given number is 0, मतलब हमारा लास्ट पार्ट का ये नंबर ये हमारा ट्रू हुआ। ओके, बिकॉज हमने इनिशियलाइज में क्या स्टेटमेंट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे भी मैंने 0 ही पुट किया है, सो हमारा फर्स्ट टू ये फॉल्स है, थर्ड वन ट्रू है, सो हमारा थर्ड वन गिवन नंबर इज 0 ये प्रिंट हुआ। यू कैन सी हियर गिवन नंबर इज 0। ओके, सो ये इफ एल्स का हम लोगों ने चेक किया। ओके, सो this is about your if else and all। okay, so next lecture में हम लोग देखेंगे like switch case। okay, so today आज हमने लर्न किया if, then if else, if statement, then if else statement, right, if else, and यहाँ पे if और else दोनों यूज होते हैं, और nested if, right, nesting of if, nesting if else, राइट। अब if else तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही एग्जीक्यूट होता है, जिसका सिंटैक्स हमने यहाँ पे ये देखा है, राइट, और हमने प्रोग्राम भी देखा, कंडीशन इज ट्रू देन ये एग्जीक्यूट होगा। और if else में क्या, अगर आइदर 1 और 2 दोनों से जो कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। और if else में 3 कंडीशन होती है, जो भी कंडीशन मीन्स if else and else, जो कंडीशन ट्रू होगी वो कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज अबाउट इफ एल्स, जो कि हम लोगों ने सिंटैक्स प्लस कोडिंग और आउटपुट तीनों ही देखा, राइट, सिंटैक्स, कोडिंग एंड आउटपुट। So this is about your control flow statement। so in next lecture we will see like switch case। okay, so correct, so next time in next lecture we will see switch case। okay, then after switch case we will check the program। okay, then ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, आज का पॉइंट है इटरेशन एंड लूपिंग स्टेट। सो इटरेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट में कंडीशन इज थ्रो सी या एक्सिक्यूट होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, आज का पॉइंट है इटरेशन एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, so iteration and looping statement meaning is one iteration or oblique looping statement। so पहले इसका what is the iteration looping statement, इसके कुछ टाइप्स है, we will see today। okay, so iteration statement or looping statement, looping or iteration statement is used to execute the block of code। let me write first here। okay, looping and iteration statement is used to execute the block of code, the block of code। okay, the block of code, multiple looping or iteration statement is used to execute the block of code multiple time। okay, so it shall be execute till the given condition is true, execute it shall be execute okay till the given condition is true।
सो ये लूपिंग में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं तब तक ये एग्जीक्यूट होता है. गिवन कंडीशन इज ट्रू. ओके, कंडीशन is true. Okay, so looping and iteration. Looping or iteration statement is used to execute the block of code multiple times. It shall be executed till the given condition is true. So जब किसी भी लाइन को, ब्लॉक ऑफ लाइन को मेनी टाइम एग्जीक्यूट करना हो तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज किया करते हैं, राइट. सो गिवन कंडीशन लाइक दिस, जब तक लूप के साथ दिए हुए कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप के अंदर लिखी हुई लाइन एग्जीक्यूट होती है. सो लूपिंग और इटरेशन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम. इट शैल बी टिल गिवन कंडीशन इज ट्रू. इट मीन्स जब तक लूप के साथ दिए हुए कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप के अंदर लिखी हुई लाइन एग्जीक्यूट होती है. अब जो लाइन आपने लिखी है, जो कंडीशन आपने किया है, वो सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट. So here types of loop is there. Yeah, looping statement, iteration. Okay, types of looping statement. Yes, you can say the iteration and looping, right? Statement, right? So यहाँ पे two types है. Okay, types of looping or iteration statement. That is the two types. So let's see these two types. First one is you can say first one is let me give the first number like this. Okay, first one is a entry loop, entry control loop, entry control loop, and another is a exit control loop, exit control loop. Okay, so ये दो टाइप है. सो इसमें फर्स्ट टाइप के अंदर एंट्री कंट्रोल लूप, इसके एंट्री कंट्रोल लूप इसके अंदर आपको entry control loop, you will get like a in this you get while loop, and then b, that is for loop. Okay, and next this second type, that is exit control loop, in this you will get do while loop. Okay, so first understand the meaning or difference between entry loop and exit loop, right? So पहले हम लोग इसका difference देखते हैं, क्या है exit control loop and entry control loop, right? The difference between these both, right? So let's discuss first these two both different between. So let's see difference between the exit loop and entry loop. So entry loop में a given condition is check first time of loop. So entry control loop. So here in entry control loop, the given statement, given condition is check given condition is check at the first time of loop execution, at the first time of loop execution. So this is execution. Okay, so this is about entry control loop. And so let's see difference between entry control loop में given condition is check at the first time of loop execution. सबसे पहले condition check किया जाता है. अगर दिया हुआ condition true हुआ तभी ब्लॉक जो होगा, मतलब स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब अगर एंट्री में पहली कंडीशन फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक की जाती है, अगर गिवन स्टेटमेंट ने कंडीशन ये मैच करता है या ट्रू होता है तो ही वो आउटपुट वी कैन सी या एग्जीक्यूट होता है. और सेकंड है एग्जिट कंट्रोल लूप. ओके, एग्जिट कंट्रोल लूप. सो इसमें क्या है, लेट्स सी. सो हियर
exit control loop given condition is checked at, let's copy this, means just 1 minute. Okay, given condition is checked at the outer position, is checked at the outer position. Okay, is given condition is checked at the outer position of loop. Okay, of loop, यहाँ फर्स्ट टाइम ऑफ लूप एग्जीक्यूशन होता है, तो गिवन कंडीशन इज चेक at the outer position of loop. So here, so that outer position of loop, so that block of loop will be execute given loop will be executed minimum executed minimum so see, exit control loop given condition is checked at the outer position of loop, so the block of loop so that the block of loop will be executed minimum one time. Okay, one time, so minimum one time, whether the given condition is false. Okay, whatever the given whatever the given condition is false. Okay, whatever the given condition is false, okay, so let me tell you first. Okay, so given condition is false, so this is the do while. So listen, एंट्री लूप और एग्जिट लूप में क्या डिफरेंस है? एंट्री लूप में कंडीशन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने से पहले ही चेक किया जाता है फर्स्ट पोजीशन में, बट इन एग्जिट कंट्रोल में गिवन कंडीशन इज चेक एट आउटर पोजीशन ऑफ लूप. ओके, so exit loop में क्या है? Given condition is checked at the outer position of loop, so the block of loop will be execute at least whatever the given condition is false. Means अगर मतलब कंडीशन गलत भी हो जाती है, अगर कंडीशन गलत भी हो जाती है तो क्या डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा, तबकि व्हाइल लूप और फॉर लूप में एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तब जाके उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. किसका मतलब? व्हाइल और डू फॉर लूप में कंडीशन चेक होती है, अगर वो मैच करती है, ट्रू है, तो ही वो एग्जीक्यूट होगा. बट इन केस एग्जिट कंट्रोल लूप विच हैविंग मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप जो इसमें डू व्हाइल लूप है, उसमें क्या होता है, अगर कंडीशन रॉन्ग भी होगी तब भी वो एक टाइम एग्जीक्यूट करता है. ओके, सो यहाँ पे वी हैव टू नोट सम पॉइंट लाइक दिस दैट. सो यहाँ पे नोट ईच लूप हैज 3 important पार्ट्स. सो हर एक लूप में हैज 3 important पार्ट्स, 3 important parts. Let's see. You can say this is syntax also. Note initialization, we know very well, we have studied in for loop also, right? Initialization, right? Then initialization क्या करता है? Starting point start करने के लिए we require the initialization, right? Starting point. For starting point purpose we require the initialization, right? Okay, then after initialization, updation. You know very well this is all because हम for loop में updation, initialization ये सब देखे, right? Updation,
Okay. So next is the updation here. So in updation इसमें यहाँ पे increment and decrement जो कि हम लोगों ने for loop में अच्छे से समझा, right? What is the meaning of increment and decrement, right? Decrement. Then this is, you can say, the syntax of this. Let me correct this. Updating is right. Okay. So after third point is condition. That is the ending point. Condition. 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 That is ending point. Ending point, right? Ending point statement. So हर एक लूप पे तीन पार्ट्स है. इनिशियलाइजेशन, विच हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूप या अपना स्टेटमेंट, दैट इज द इनिशियलाइजेशन. देन which type of updation we are using there, increment or decrement type, so we are applying there. Then condition, ending point, what is the ending point, it is a condition. Okay. हॅलो राज, की सुकून स्पीकर ऑन झाला? चुकून झाला मॅडम. ओके ओके, कारण की मला लक्ष नव्हतं म्हणून विचारली. ओके ठीक आहे, चुकून झालं ना. अच्छा, ये कुछ तीन टाइप्स के पार्ट्स है जो कि लूप में यूज किया जाता है. सो व्हाइल लूप. So first is the while loop here. While loop. Okay. So while loop here. While loop is a entry control loop. Is a entry control loop. Because हमें पता है ये entry control loop के अंदर आता है, right? Entry control loop, right? So given condition is checked at the entry time in a block. So यहाँ पे जो given condition होगी वो check होगी at the entry time. If the given condition is true, then block shall be executed, otherwise not. So syntax क्या होगा इसका? Given condition अगर true होगी so block will be executed, otherwise not. So syntax of while loop, that is first initialization. Right? Then while condition. While condition. While condition after statement. Okay, statement. So statements. Okay, so let's check the what? Let's check the example. Let's take example here first. Just 1 minute. Okay. Let's move the while loop example. Next new one. Okay. For this purpose. Okay. Here we will see the example of while loop. So first we have to, what to do? We have to do here while loop. In while loop, we know the syntax of while loop, so we will print the here like class, right? Then we will print after class. We write here, suppose capital. We have to print 10, 1 to 10 number. Okay, so let's take 10 number. Sorry, number 10, 1 to 10 number we have to print here. Okay, so we will give the class name like number 10. Okay, then sorry, where we are. Okay, then class given the number 10, then public static void main, public static void main. Okay, public static void main, then we put here string args, string args. Okay, then int initialization statement, then statement 1
equal statement equal to 1. Okay, then while, अबे हमें देखना while statement is less than or equal to 10. Okay, statement is less than or equal to 10, then close statement, then system dot out dot println statement statement, right? Then statement plus plus, right? So close while loop, close the class. Okay, so यहाँ पे ये 10 टाइम लूप ये execute करेगा. Okay, if given condition is true. Okay, so let's save this code. Okay, so while saving we have to give the number class name number 10, that is, and Java extension, right? So let's execute this code. Let's see. Then class, okay, sorry, command prompt we have to go. Command prompt, then after command prompt we have to write there. Okay, then cd desktop, then cd java, then java c program name dot java. If error, then show it will be show, and if error free, then it will be compiled. So some they saying the here error is there in 12 line. Okay, so we have to check what happened in 12 line. uh, we missed to complete this class. Here see here we pin class number. Okay, then we given the public static, then after while loop we given the curly braces, we didn't close it. So see, while loop close, then static close, and this now it will be run. Okay, so see, run it again, compile first. Okay, I don't think so कि आपको कोई error show होगा. Okay, then wait, run it, compile properly हो गया है. अभी हम लोगों को इसको रद्द करना. ओके, सो 10 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा. सी 1 to 10 टाइम ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा बिकॉज गिवन कंडीशन इज ट्रू. सो 1 to 10 टाइम हमारी 10 टाइम ये लूप हमारा एग्जीक्यूट हुआ इधर. ओके, 1 to 10. सो हमें 1 to 10 ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई. ओके, सो दिस इज अबाउट अवर व्हाट while loop, right? So let's see the for loop. I already explained you in my while we मतलब जब हम लोगों ने practical किया था. Now do while loop. The do while loop statement allows loop to continue while condition evaluate true. Okay, so do while loop का syntax, do while loop का syntax ऐसा होगा: do, then statement, I will like statement, then complete while expression, while expression. Okay, then close. So let's move on code. So यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोगों को करना है do while loop. Okay, so it is a exit, ये एक exit statement के अंदर आता है, right? Do while loop. So here in do while loop use let's see, let's take class, let's take do w. Okay, like this, then name db, and then public static void में public static void main. Okay, public static void में so string args. Okay, string args, then int statement, then statement equal to 11. Okay, so then do
system dot out dot println system dot out dot println, that is st, then st plus plus, okay, then close it, then while, okay, then while st is less than or equal to 10, then okay, so let's check it. Here I will not explain you the while for loops example and with an expression, because in a previous lecture जब हम लोग practical first कर रहे थे तभी मैंने आपको for loop और for का explanation दिया है, so go and check this. Okay, so यहाँ पे हम do, इसलिए while और do while भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे. Okay, so let's run it. Java C, give the exam code name, so class name. Okay, अगर एरर होगा तो एरर विल शो, और एरर अगर रन होगा कंपाइल हो रहा है, अगर एरर फ्री होगा तो डायरेक्ट हम लोगों को रन का ऑप्शन आएगा. दैट इज वी कैन राइट आवर फाइल जावा इन आवर फाइल नेम. इट्स टेकिंग टाइम, जब तक कि एरर वो सब कोड वन बाय वन चेक कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, इसलिए इतना टाइम हम लोगों को लगता है यहाँ पे, राइट. सो लेट कंपाइल इट फर्स्ट, देन we can see the our output what happened here. It's taking too much time. See here, some problems occur like this, so just see here. Okay, Java C, okay, it compiling is taking two time. Okay, it's compiled, run properly, then give the file name like Java and file name. Okay, see file name गलत हुआ देना, इसलिए taking like this happen. Java then do. Why happen Java long class of, so go to Java C then dot Java do while, right? Java C dot Java, then it compile. If it compile free, this okay, compile free, then Java a class name, it will print our 11. Okay, so statement. So this is about do while and while, and you know very well about for loop, right? Now for each loop, for each loop, this is the next point. So the difference between do and while, the do statement is similar to the while statement, except that termination condition is the end of the body of loop only. You want to use do statement if you want to perform the body of loop at least once, regardless of a condition. Okay, so next do for each loop, it used to iterating over the statement of array and condition. मतलब हम लोगों को for each में क्या शो होता है, array, collection of array हम लोगों को प्रिंट करने के लिए हम लोग for each for loop यूज करते हैं. सिंटेक्स क्या होगा इसका, for then data type, for data type variable for data type variable. Okay, you can give like this also, and you can give the underscore. So for data type variable array, for data type variable array, then collection, array का जो collection होगा उसको express करने के लिए हम लोग ये loop यूज करते हैं. Okay, collection.
मतलब अरे में जो भी कलेक्शन होगा उसको प्रिंट करने को हम वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप. ओके, सो हियर statement then close. Okay, so let's take example. Okay, class name for FL, that is sorry, 1 minute, for each. Okay, for each class name दिया हमने. Okay, so इस for each को okay, then class is for each, then public static void main, then string args okay, then int a so ये अरे में जो कलेक्शन है ओके, इसको हम प्रिंट करने के लिए वी आर यूजिंग द फॉर ईच कलेक्शन 22 27 and 11. Okay, so then for int that is array, print array here. ओके, आता 1 मिनिटच उरलंय आणि आय डोंट थिंक सो की आपला हा कोड आणि रन होऊ शकतो आता. हा कोडिंग आणि ह्याचं आउटपुट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. आणि आतापर्यंत जे म्हणजे आपण कोडिंग थेअरीचे पण बघितलं या इटरेशनचा रिगार्डिंग काही प्रॉब्लेम जे लूप बघितलो आपण, काही प्रॉब्लेम राज, अमिश, प्रणव, साक्षी, टेल मी, संगीता, उस्मा, विनय, येस टेल मी. 1 मिनिट राहिलंय. एनी प्रॉब्लेम, क्वेरी, मॅडम. समजलंय? ओके, बरं. हा कोड आपण नेक्स्ट लेक्चरला करूया. ओके, कम्प्लीट. चलो, यू कॅन लिव्ह नाऊ.